So second data. What is the meaning of second data? These data are collected from published and unpublished sources. So it is called second hand information. तो केते गुडे परोक्ष तथ्य अच्छी जोटा कि आम परोक्ष माध्यम तथ्य संग्रह करता है आमर अनुसंधानकारी परोक्ष माध्यम तथ्य संग्रह करता है जोटा कि आम हैंडबुक अच्छी किंबा आमर सेंसस डाटा अच्छी किंबा पीरियडिकल्स अच्छी किंबा आमर एग्रीकल्चर सेंसस अच्छी. So different books are there to collect the secondary data. So it is the second hand information. These data are already collected and ready for use. So these are called second data. So it may be published, it may be unpublished. So published sources means some of the second data are published in the form of journals, periodicals, official publications, daily newspaper, magazine, bulletins, etc. So here the investigator can collect the information which is ready for use. आम दैनन्दिन खबर कागज रे किछि तथ्य पाउ थाए, मैगजीन मध्ये तथ्य पाउ थाए एवं माने विभिन्न पत्र पत्रिका हो किंबा हैंडबुक हो ता माध्यम रे आमे तथ्य संग्रह करथाउ एवं that data are ready made, already collected previously. So these are called published sources. So another is unpublished sources. These data are not always published. It is प्रकाशित हुई नहीं. It is available in files. The reports of our government, different departments, records of private and public enterprises. So these data are available in government offices and private enterprises. So one can visit that organization and collect the information from their files, from their records, that is called unpublished sources. So what are the merits? यातर कौन सुविधा होची? So it is first one is it is very easy and convenient to collect data. So कथा होची आमे जेतल चाहिबा जो समय चाहिबा आमे डाटा कलेक्ट करि परिबा आम कोनसी कॉम्प्लिकेशन नाही भारी सहज आमे हमको आमे जेमती चाहिबा सेमती तथ्य आनि परिबा ऑलरेडी इट इज अवेलेबल. सो सेकंड मेरिट आर सुविधा कोन इट सेव्स टाइम मनी आज इट इज नॉट कलेक्टेड फ्रॉम डोर टू डोर. आम कोनसी व्यक्ति पाखु जिबार नाही घर घर बोली कि तथ्य संग्रह करिवार नाही. या द्वारा आम समय को आमे सेव करि पारले एवं खर्च मध्य कमिगला आमे व्ययबहुल भी नहीं आमे सिंपली वी कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. द थर्ड मेरिट इट इज यूजफुल इन इन्वेस्टिगेशन वेयर प्राइवेट डाटा इज नॉट पॉसिबल. केतोटी तथ्य अछि जोड़ी कि आमे प्राइवेट डाटा कलेक्शन करि परिबा नहीं. सम इनकन्वीनियंसेस विल अराइज. सो in that case private data is ready for use. So many second data are reliable. केते गुडे तथ्य अछि reliable जोटा precautions are taken by government departments to collect information by employing expert investigator. So these data are reliable. So in some cases second data is also reliable. सो केते गुडे तथ्य अछि एहा निश्चित भाव में शुद्ध केते गुडे तथ्य अछि शुद्ध एहा होची हमर सेकेंड परोक्ष तथ्यर एई होची सुविधा जो सुविधा द्वारा आमे जणे अनुसंधानकारी सहजरे तथ्य संग्रह करी तार निर्दिष्ट लक्ष्य पूर्ण करिया पई सहायक होइथाय. तो व्हाट आर द डिमेरिट्स इन केस ऑफ सेकेंड डाटा? तो सेकेंड डाटा कोन को डिमेरिट्स अछि? इट लैक्स एक्यूरेसी. एक्यूरेट डाटा will not be available. So whether that investigator collect the information casually or systematically or with honesty, so we cannot say हम कहि परिबानी जदि अनुसंधानकारी ठीक भाव रे तथ्य संग्रह करिछि कि नाही तो डाटा में लैक एक्यूरेसी. सो माने शुद्धता एतरे कम रही.
The second demerit is it needs extra precautions. So, in this case precautions are to be undertaken, care must be undertaken while collecting the second hand information, the second hand data. परोक्ष तथ्य आमको कौन करिया पड़िबो, प्रिकॉशन आ पड़िबो, सतर्कता अवलंबन करिया पड़िबो. Failing which it may lead to misleading result, faulty result, or that we have already discussed distrust statistics. आम तथ्य रे संशय आसी सृष्टि हेबो. तो third demerit is all types of data are not available. So, all types of data are not available in case of secondary sources. So, some data are to be collected from the primary source. So, it is inevitable, we cannot collect some information which are available from grassroots level. तो केते गुडी तथ्य अछि हमको प्राइमरी सोर्स रु आनिया पड़िबो, किंतु दैट केस सेकंड डाटा फेल्स टू गिव द रिजल्ट. The last demerit of second data is it does not fulfill the purpose and need of investigation. कौन से अनुसंधान कार्य लक्ष्य दिगरे यह सहायक होई पारे नाही, कारण एते शुद्धता कम थाए. कारण एतरे कौन होची जो तथ्य अनुसंधानकारी तापरे विश्वास कमी जाए, कारण सेकंड डाटा मे बी wrong, may be faulty. So, it does not fulfill the purpose and need of investigation. अनुसंधानकारी लक्ष्य पूर्ण करने दिगरे यह सहायक होई न थाए. Now, this is all about the second data that we have already discussed in my previous chapter, that primary data. So, the organization of second data. So, you know different organizations are there to collect second data. So, you know one of the organization, National Sample Survey Organization. So, NSSO is one of the central government agency to collect various types of information, which was established in year 1950. So, another department is Central Statistical Organization, Survey of India. So, different government organizations have been appointed to collect second hand information. Their primary duty is to collect the information, and it is processed and published in the journals, magazines, periodicals. So, these are the organizations in which second data are collected. So, now methods of primary data collection. So, when primary data are collected, some methods are to be adopted. So, there are 5 methods. Direct personal investigation. Number 2 is indirect oral investigation. Third one is through local representatives. Fourth one is mailed questionnaire, and fifth one is sent through enumerators. So, these are the different methods in which primary data can be collected. So, we can go one by one. So, you know personal investigation, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति. प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान पद्धति रे आमे कौन करिबा ना, जो इन्वेस्टिगेटर प्रत्यक्ष भाव में जो रेस्पोंडेंट पाखकू से जीवो एवं ताठरू विभिन्न क्वेश्चन रो पचारिकी ताठू बुझिकी तथ्य संग्रह करिवो. So, in this method the investigator personally visits the respondent or the person and collect the data. So, the investigator collect the information through interview with the person, that is called personal investigation. So, when the investigator visits the respondent or informant, so lot of precaution is to be taken while collecting the information from the respondent. So, you know, so personally the informant should furnish the information if he is satisfied. जदि इन्वेस्टिगेट अनुसंधानकारी ताकू ठीक भाव में एक्सप्रेस करि पाउची, ताकू ठीक भाव बुझे पाउची, better understanding, then the informant or the respondent will give correct information and the data will be fulfill the accuracy. So,
it is very better method to collect the information. So, there are some merits and also some demerits. So, what are the merits in case of a direct personal investigation? Data is more reliable as they are obtained directly from the respondent. So, ଏଠି ହେଉଛି ତଥ୍ୟଟା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରିଲାଏବଲ୍, ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ଶୁଦ୍ଧ, କାରଣ ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ରେସ୍ପଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଠାରୁ ତାହା କଲେକ୍ଟ କରେ। ସୋ ଏଥିରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅଧିକ, এই ତଥ୍ୟକୁ ଆମେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। So, number 2 is it is more flexible because the investigator can change questionnaire according to the need. कारण जितेबाला इन्वेस्टिगेटर चाहिए तार क्वेश्चन चेंज कर पारिबो, putting different questions, additional question may be asked for माने the inquiry of the investigator, for the purpose of the investigator. So, it is more flexible. The investigator can change the questions and schedules for for furnishing good result. So, it is definitely more reliable and it is more flexible. The third one is, in this method data are more accurate. It is accuracy अच्छी, accurate means पूरा update जोटा कि निर्भुल माने faultless, तो इठी होची माने शुद्धता अधिक. The next fourth point is, in this method sensitive questions may be avoided. Those questions which may hurt the respondent or informant may be avoided, failing which the respondent will give a faulty information. So, the investigator can also collect other information also by putting the various questions and collect other informations also. ताले जदि आमे कोचे आमर अनुसंधानकारी चाहिए भी तार अधिक तथ्य आनी पारिबो, कारण जेहेतु से प्रत्यक्ष भाव में जड़े इनफॉर्मेट ठारू संग्रह करुच्ची तथ्य, से चाहिए भी एक्स्ट्रा तथ्य संग्रह करि पारिबो. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन. प्रत्यक्ष अनुसंधान क्षेत्र में माने जड़े अनुसंधानकारी अनेक तथ्य सहजरे संग्रह करि पारे, कारण जेहेतु फील्ड इनक्वारी अच्छी, फील्ड रे जाइकी सर्वे करुच्ची एवं फेस टू फेस जो इनफॉर्मेट सहित मीट करुच्ची, तेणुक ये सब एते सुविधा मिले. तो व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन? So, some demerits are found in case of direct personal investigation. So, first demerit is very expensive method of data collection. एथर अधिक खर्च, कारण the investigator has to visit field inquiry and collect the information from door to door. A lot of time is required and money is to be spent. So, one of the it is very most expensive method of data collection. So, number 2 is, this method is not suitable where field of inquiry is vast and wide. So, when the field of inquiry जदि आमर तथ्य संग्रह परिसर व्यापक हुए, this method fails to माने operate because it takes a lot of time to collect the information. So, third demerit is, under this method there is a possibility of personal prejudice or bias. So, the personal prejudice अच्छी, personal prejudice means personal bias. जड़े इन्वेस्टिगेटर बायस्ड माने प्रभावित होई जदि तथ्य संग्रह करे, एथरे अधिक पॉसिबिलिटी अछि, कारण जेहेतु से तथ्य संग्रह करुच्ची तार माने फील्ड को जाई जाउची, तेणु चाहिए भी से तथ्य माने बायस्ड की मध्य कलेक्शन करिबार पॉसिबिलिटी अछि, संभावना अछि. The fourth one is, investigators should be trained and skilled, otherwise it may lead many faults of data collection. जदि इन्वेस्टिगेटर जदि ट्रेन न हुए, जदि स्किल्ड न हुए, तबे से ठीक इनफॉरमेशन कलेक्शन करि परिबो नाही. सो ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटर इज रिक्वायर्ड फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, failing which it may lead faulty result. So, we should know that the investigator should be properly trained by means of training
expertise, so that the investigator will be able to collect right information from the respondent. जदि से ठीक भाव में माने बुझी ताले से तार इनफॉर्मेंट को बा रेस्पोंडेंट को ठीक भाव में बुझे तथ्य संग्रह कर पारिबो. So lot of training is to be required for the investigator. So investigators should be trained properly, failing which the data will not be collected correctly and honestly. So these are the various merits and demerits in case of direct personal investigation. So direct personal investigation gives a better result than other methods. So the second method of primary data collection is indirect oral investigation or indirect personal investigation. So in this method the investigator prepares suitable questions and collects the data indirectly by interviewing the person who are known to be close to the original person. The answers are recorded by the investigator. So in this method the investigator has to prepare a suitable questions or schedules. माने अनुसंधानकारी तार निर्दिष्ट लक्ष्य अनुसार क्वेश्चन तैयारी करिवो, प्रश्नावली एवं शेड्यूल तैयारी करी तार जो जो ओरिजिनल लोक जो थारू इनफॉर्मेट रो क्लोज रिलेशन जे अछि ताटू से तथ्य संग्रह करिवो and that answers are recorded by the investigator. So in this case the original informant is absent, his close relatives will furnish the information to the investigator. So this is called indirect oral investigation. तार पड़ोसी हो तार रिलेटिव हो ताठारु क्वेश्चन माने जो पचारि की बुझी ताकू रेकॉर्ड करबा होची मेथड होची indirect oral investigation. So here there are some merits and demerits. एतर मध्ये केते सुविधा अछि केते असुविधा भी अछि. So in this method what are the merits, कोन कोन सुविधा एतर अछि. So now it can cover wide area, माने अधिक व्यापक क्षेत्र यह प्रयोग हो पारिबो कारण जने इन्वेस्टिगेटर अधिक तथ्य संग्रह करि पारिबो. So when the field of inquiry is far and wide, this method is suitable. कारण जने अनुसंधानकारी चाहिले अधिक तथ्य संग्रह करि पारिबो जेहेतु एब्सेंट अछि जने तार रेस्पोंडेंट तार रिलेटिव थारु क्वेश्चन आनि कि मध्य किबा गोटे जगह बसी मध्य तथ्य संग्रह करि पारिबो. The investigator will not go to the place in which data will be collected. Sitting in a particular place and asking to different persons to collect the information. So it can cover wide area. One of the merit. The second merit कौन सुविधा अछि. Second merit होची कौन ना it saves time, labor and money. ए क्षेत्र रे कौन होची अनुसंधानकारी रो समय अपचय ह्रास पाइला बा समय को से सेव करि पारला, लेबर भी कमिला, खर्च भी कमिला कारण डोर टू डोर जाइथांता डोर टू डोर जीवार नाही गोटे जगह रे बसी तार रिलेटिव संपर्क मानक पचारि तथ्य संग्रह कला. So in this method collection of data saves time, labor and money. So it is one of the merit. The third merit, तृतीय सुविधा कौन हला, it gives speedy results, quick results. कम समय मध्य रे आमे अधिक तथ्य संग्रह करि परिबा. So investigator can collect more information with less time. So it gives quick results. यह मध्य गोटे सुविधा. Fourth one is जो अन्य गोटे सुविधा होची कोन, third party does not conceal the facts. Third party will furnish the information. कारण जो ओरिजिनल लोक फैक्ट कनसिल कर पारे लुचई रखि पारे किंतु यदि थर्ड पार्टी जो होची से तार इनफॉरमेशन ठीक दबो कौन सी माने गुप्त जिनस से रखि पारिबन कारण जेहेतु तार संपर्कीय तार
जो रिलेटिव्स ठारू आम तथ्य ठीक तथ्य पाई परिबा कारण आम बेले बेले आम गोटे इन्वेस्टिगेशन देखुवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन तले करे से ता रिलेटिव को पचारे कारण जो लोक माने कल्प्रिट जी ताकू पचारे से भूल कथा कहब कहीं ना सी माने तार रिलेटिव तार माने पड़ोसी नेबर कोठा पचार बेटर रिजल्ट पाई पार तेणु ये कथा आम जाने थर्ड पार्टी विल नॉट कंसील एनी विल नॉट हाइड एनी फैक्ट so so it is one of the merit. The last merit is collection of data through this method avoids prejudice or biasness कारण एतरे जेहेतु person concerned is not present the other person will give the information so there is no question of a prejudice biasness कारण प्रभावित होबार नहीं कारण अन्य लोक तथ्य दौची सो एतरे मध्य यही सुविधा गुड़िक आम पाचे इन केस ऑफ पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन these benefits we get from this method of data collection. So what are the demerits in this method? यार कौन दुर्गुण गुराक अच्छी so one of the demerit is that in this method collected data lacks accuracy माने we cannot say the data is accurate when the original person is absent we cannot say so it is माने lacks accuracy. The second demerit is data collected by this method doesn't maintain uniformity कारण इधर यूनिफॉर्मिटी रहे नहीं कारण जो क्वेश्चन टा सीरियली हो कि प्रॉपर्ली माने आम जो क्वेश्चन पचारे आम जदि थर्ड पार्टी टू आनिबा ताले एतरे माने कोन यूनिफॉर्मिटी रहबनी so it lacks uniformity. The third demerit is personal prejudice bias of the investigator may affect accuracy of the data. जदि थर्ड पार्टी बायस हो जाए ता रिलेटिव हो थाई पारे माने दैट माने पार्टी or the third person or relative will conceal some or will hide some information is close to the original person कारण जदि से ओरिजिनल पर्सन ठार जो कि तार रिलेटिव होइतिबो ताल बायसनेस आसीबो प्रभावित हो पारिबो अरे मोर से रिलेटिव मु काई देले तार असुविधा हो जिवो तो सी माने भाबी चिंती किछि तथ्य लुचै कि रखिबो तेणु एतर मध्य पॉसिबिलिटी अछि डिमेरिट एटा कारण आरो जो माने दुर्गुण पर्सनल प्रेजुडिस और बायस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर मे अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द डाटा जदि बायस हो गला ताले तथ्य भूल आसीबो. Inaccurate data and personal prejudice may lead harmful conclusions. जब कौन से inaccurate data आसीबो माने it won't solve the purpose of the investigator कारण जो पर्पस पॉइंट इन्वेस्टिगेटर तथ्य संग्रह करुच्ची तार माने लक्ष्य फुलफिल हो पारिबो नाही फलप्रद हबो नाही काहेकि ना जेहेतु आमे प्रेजुडिस पर्सनल बायसनेस अछि कारण आमे a lot of care is to be undertaken in this method while collecting the information under indirect oral investigation or indirect personal investigation. प्रत्यक्ष अनुसंधान क्षेत्र रे परोक्ष अनुसंधान क्षेत्र रे केते गुडी सतर्कता अवलंबन न कले एतरे अनेक माने भूल तथ्य आसीबार संभावना थाए तेणु परोक्ष अनुसंधान रे केते गुडी सतर्कता ग्रहण कले आमे ठीक तथ्य पाई परिबा एवं जड़े अनुसंधानकारी तार लक्ष्य दिगरे माने सफल हो पारिबो. दिस इज अबाउट द डाटा in case of primary data and such method will give the information for the purpose of the enquiry. So next is information through local correspondence. So information through local correspondence it is another method of our primary data collection. So आमे जते प्रत्यक्ष तथ्य संग्रह करछे यह मध्य एक पद्धति जो इनफॉरमेशन जो तथ्य आमे लोकल करेस्पोंडेंट प्रतिनिधि माने स्थानीय प्रतिनिधि ठारू मध्य आमे तथ्य संग्रह करि परिबा. इन दिस मेथड
the investigator doesn't visit to the field कारण कौन सी क्षेत्र को न जाई माने से तथ्य संग्रह करुच्ची केमती ना द इन्वेस्टिगेटर विल अपॉइंट लोकल एजेंट्स और लोकल करेस्पोंडेंट्स टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सेंड टू द इन्वेस्टिगेटर कारण जो अनुसंधानकारी किसी प्रतिनिधि लोकल प्रतिनिधि मानक अपॉइंटमेंट करे आउ से माने लगातार माने सेठू तथ्य संग्रह करी अनुसंधानकारी को दे थाए कारण स्पेसिफिकली दिस मेथड इज very useful in case of newspaper agencies. So newspaper agencies तांकर प्रत्येक क्षेत्र में तांकर प्रतिनिधि मानक रखि थांती केतले कोन घटिला तांको इन्फॉर्मेशन आसी पहुँचबो एवं ताकू से तांकर तथ्य माध्यम रे तांकर जो रहिछि दिग को लोक मानक माध्यम रे पहुँचेबा एवं सरकार को जणेबा ए सब माध्यम रे होई थाए. So you know, so this is about information through local correspondence. So in this method the investigator will not visit to the field and collects the information by appointing local representatives, local correspondents. From time to time they will send it to the investigator. So regular informations are collected from far distant places. विभिन्न क्षेत्रु अनुसंधानकारी तथ्य संग्रह करार सुजोग पाए कारण प्रतिनिधि माने तांको दैनंदिन माने जो रिपोर्ट अच्छी बा दैनंदिन तथ्य संग्रह करी अनुसंधानकारी को देता है जहाँद्वारा कि से सहज तथ्य संग्रह करि पाई थाए एवं या द्वारा अनेक तार उपकार होता है. कौन व्हाट आर द मेरिट्स? सो केते गुडे सुविधा अच्छी ए मेथड मध्ये केते गुडे असुविधा अच्छी. सुविधा होची कौन देखिबा मेरिट्स. दिस मेथड इज चीप एंड इकोनॉमिकल. इट सेव्स टाइम मनी एंड एनर्जी कारण ये हूँ ये मेथड रे माने खर्च हबार नहीं कारण गोटे लोक अपॉइंटमेंट कले से अनेक इनफॉरमेशन दे पारिबो कारण सस्ता हला खर्च व्ययबहुल नुहे एवं समय अपचय हला नहीं एवं एनर्जी भी रहिला मनी भी खर्च हला नहीं. तापर देखो एटा हूँ व्ययबहुल नुहे एवं बहुत सहजरे एवं कम समय मध्यरे ये तथ्य संग्रह करा जाई पारे. ये मेरिट्स. Number 2 is this method is suitable where the area of inquiry is wide. जितले गोटे एरिया जो क्षेत्र में तथ्य संग्रह करा जाए जदि भास्ट एरिया अच्छी माने द इन्वेस्टिगेटर कैनॉट कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन ए लॉट ऑफ माने इन्वेस्टिगेटर आर टू बी अपॉइंटेड. So you know, so when the area of inquiry is large and wide, many number of investigators are to be appointed to collect the information. It will take time. So in this method the data are collected with less time and it covers wide range of area. It is vast coverage. यह मध्य सुविधा रही. तृतीय सुविधा है कौन? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सम स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ सर्वे. केते पर्पज पाई कि सर्वे रही न्यूज पेपर जमती हम कहले एमती अनेक एजेंसी अच्छी से माने गोटे जगह रही मध्य तथ्य संग्रह करती एवं तांकर अपॉइंटिंग पर्सन से माने कलेक्शन करी एवं इंटरनेट माध्यम रे हो किबा माने तांकर माने व्हाट्सएप माध्यम रे हो से तथ्य पठै थांती कारण दिस मेथड इज मोर सुटेबल फॉर सम स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ सर्वे. सो इन दिस मेथड देयर आर सम डिमेरिट्स. एई पद्धति केते गुडे मध्य आमे दुर्गुण देखा पाइबा. कौन? डाटा आर नॉट रिलायबल बिकॉज इट इज नॉट ओरिजिनल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन कारण एतरे ओरिजिनलिटी नहीं कारण विश्वास योग्य नुहे शुद्धता कम कारण एठी से फील्ड एनक्वारी कला कि न कला कि घरे बसिकी ता मन को किसी भाभी तथ्य देला. सो द इन्वेस्टिगेटर इज एब्सेंट. हाउ कुड द इन्वेस्टिगेटर नो व्हेदर माने करेक्ट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड और नॉट कारण ठीक तथ्य दिया जाइए कि न दिया. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू से.
एते मध्य आमे ई माने फॉल्ट देखा पाइबा। तो सेकंड फॉल्ट इज collection of data under this method is a time consuming process. So time consuming process in the sense, so when the local representative will not provide the information, so the investigator has to go to the field and collect the information. So time consuming process, तो ता सहित काउंसलिंग करा पड़ो, कारण ठीक टेलीफोनिक मेसेज माध्यम कहीं तथ्य दौ ना, तेणु यहाँ हूँ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, लॉट ऑफ टाइम इज टू बी रिक्वायर्ड टू काउंसिल द रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर फर्निश द इंफॉर्मेशन। द लास्ट demerit is there is every possibility of a personal bias or prejudice because there is absent of investigator, जेहेतु अनुसंधानकारी अनुपस्थित रोचे तेणु ए पर्सनाल प्रेजुडिस अच्छी। जड़े इन्वेस्टिगेटर माने जिते फील्ड इनक्वारी करे से ठीक तथ्य आनिबो, जिते कौन सी अपॉइंटिंग पर्सन रहा सी भूल दबार बहुत पॉसिबिलिटी अच्छी, हुई तो बायस्ड होइक दे पारे, तेणुक एतरे देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ this method. तो another is method is mailed questionnaire method, मेलिंग जोटी कि आम कहे पत्राचार माध्यम आमर डाक माध्यम तथ्य संग्रह करवा। सो अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर प्रिपेयर्स ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड शेड्यूल्स and send it to the respondents through post। गोटे डाक माध्यम लिफाफा माध्यम तार क्वेश्चन तैयारी करी से पठाऊँ क्या पाखक ना रेस्पोंडेंट पाखक बा इनफॉर्मेंट पाखक। द इनफॉर्मेंट और रेस्पोंडेंट सेंड इट बैक टू द इन्वेस्टिगेटर बाय प्रॉपर फिलिंग दैट क्वेश्चनर और शेड्यूल। जो क्वेश्चनर अच्छी बा प्रश्नावली अच्छी ताको तैयारी जो कराई ताको फिलअप करी से पुणी अगेन माने इन्वेस्टिगेटर पाखक पठाइबो। This method is very suitable for a wide area coverage, माने अधिक कवरेज हो पार कम समय डाक माध्यम आम जो तथ्य संग्रह करवा। सो लॉट ऑफ प्रिकॉशंस आर टू बी अंडरटेकन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अंडर दिस मेथड। सो मेल्ड क्वेश्चनर मेथड, व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द मेल्ड क्वेश्चनर मेथड? दिस मेथड एंश्योर्स ग्रेटर एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, कारण ए मेथड रे एक्यूरेसी अच्छी ठीक तथ्य, कारण निजे इनफॉर्मेट से तथ्य फिलअप करुच्ची सी माने तार घरे बसी से फिलअप करुच्ची ठीक तथ्य से दे पारिबो बेटर प्रिसिशन। यह सुविधा अच्छी कारण तथ्य रे शुद्धता पॉसिबिलिटी अच्छी अधिक। ये प्रथम सुविधा। द्वितीय सुविधा है दिस मेथड इज सुटेबल वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वाइड रेंज, कारण जदि माने इन्वेस्टिगेशन परिसर व्यापक हुए ए माने ये जो रही पद्धति ताहा अत्यंत फलप्रद। दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द फील्ड ऑफ एनक्वायरी इज लार्ज और वाइड, सो द इन्वेस्टिगेटर कैन सेंड द क्वेश्चनर or schedules to the respondent for giving the information. So another merit, this method is more economical because only cost of printing of questionnaire, एतरे क्वेश्चन प्रिंटिंग रे जहाँ खर्च हम कि पोस्टल चार्जेस जहाँ खर्च हम किंतु आउ तार कन्वेन्स खर्च ना, तेणुक जावा आसवा अन्य फूडिंग अन्य सब सुविधा जो जो अधिक खर्च हवा कथा एतरे नहीं, तेणु से ओनली कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग कि पोस्टल चार्जेस जी खर्च हम, तेणु इट इज मोर इकोनॉमिकल, माने मितव्ययता अच्छी खर्च कम, कारण कम समय मध्य आम पाई परिबा बाय मेलिंग। तो अनदर मेरिट इज दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ लेस एरर इन दिस मेथड। एतरे एरर कम, एतरे एरर माने कौन सी भूल कम,
कहीं ना द informant or the respondent will fill it correctly and send it back to the investigator. So एतरे error आसवाटा कम. So these are the merits. So there are some demerits. एतर मध्य केते दुर्गुण रही केते असुविधा रही. So number one is the response is uncertain as respondent may not show own interest to furnish the information. गोटे एतरे असुविधा रही कौन ना जदि इनफॉर्मेट तार इंटरेस्ट ना मु कहीं देवी कौन पाई देवी कौन मोर आवश्यकता रही तेणु जदि इनफॉर्मेट बा रेस्पोंडेंट जदि इंटरेस्ट न रहिबो ताल तथ्य भूल आसीबो. तो सो द पर्पज ऑफ इंक्वायरी शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल so that the informant will be able to furnish correct information. जदि आम ताकू पर्पस ठीक लिखा जो क्वेश्चन शेड्यूल बा क्वेश्चनेयर जदि आम ठीक भाव परिप्रकाश करवा ताले जो अनुसंधानकारी ठीक तथ्य पाई परिबो. इला डिमेरिट्स. सो नंबर 2 इज अन्य के असुविधा है कौन देयर इज ए ग्रेटर चांस ऑफ पर्सनल प्रेजुडिस ड्यू टू इन्वेस्टिगेटर एब्सेंट. सो इन्वेस्टिगेटर जाऊ नहीं फील्ड इंक्वायरी को. So investigator is absent. So the informants or the respondent may give right information or incorrect information. We cannot say. आम कही पारिबानी से ठीक तथ्य देला कि भूल तथ्य देला कारण here investigator is absent. So there is chance, there is possibility of a personal prejudice under this method. So the third demerit is, so this method becomes inapplicable in case of illiterate person. So illiterate person जे निरक्षर जे पाठ पढ़ी नहीं जानी तार शिक्षात योग्यता कम अच्छी से क्वेश्चन बुझी पारिबो नहीं एवं से भी इनफॉरमेशन देवाई सक्षम होबा नहीं. So this method lacks applicable in case of illiterate person. So the data should be furnished properly if the questionnaire is very simple. Yes no question. Yes no question. हाँ कि नहीं जदि आम लिखा जदि आम रीजनल लैंग्वेज लिखा जदि अल्प पाठ पढ़ी से तथ्य दे पार. तथ्य देवाकू हेले जड़े अनुसंधानकारी ज्ञान थिबा आवश्यकता पढ़ा लेखा जानी थिबा दरकार ताले यही पद्धति फलप्रद हो पार. And next demerit is if the questionnaire is cumbersome the respondent may not furnish correct information. So completed question, if question is complicated, cumbersome, so the informant is not able to understand properly. So unless a very simple question, so the informant will not furnish correct or right information. So it is very essential to prepare very simple question and send it to the informant to furnish the information under this method, so that the purpose of the enquiry will be solved. तेणुक जितेबाला जड़े अनुसंधानकारी कौन तथ्य जड़े पाखु पठाऊे मेल जोगे तेणु ताकू ए लॉट ऑफ केयर इज टू बी अंटेकन, सर्टेन प्रिकॉशंस आर टू बी अंटेकन बाय द इन्वेस्टिगेटर. जड़े अनुसंधानकारी जिते प्रश्नपत्र तैयारी करुच्ची प्रश्नपत्रटा माने भेरी सिंपल हवा दरकार, सरल हवा दरकार, ताले जोड़ा कि जड़े बुझीपार इनफॉर्मेंट. तेणु ये हूँ माने आमर पत्र माध्यम तथ्य संग्रहर विभिन्न मार्ग एवं एतरे केतुड़ी सुगुण भी अच्छी केते दुगुण भी अच्छी. सुगुण गुड़िक आम कहले तेणुक ये माध्यम आम परोक्ष तथ्य संग्रह करूँ. तो आउ गोटे मेथड भी अच्छी. आम नेक्स्ट मेथड कहवा क्वेश्चनेयर शेड्यूल विथ द हेल्प ऑफ एनुमरेटर्स. तो एनुमरेटर जी डाटा कलेक्शन कर एनुमरेटर्स हु कलेक्ट द इनफॉरमेशन फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, दैट इज कंप्लीट एनुमरेशन.
from door to door collection je korchi ba अनुसंधानकारी. So under this method, under questionnaire method or schedules, many very simple questions are to be prepared by the enumerator for the purpose of enquiry. The answers and replies are to be recorded and noted down, then processed for analysis. जो क्वेश्चनर तैयार है, जो शेड्यूल तैयार है, ताको रेकर्ड करा जिवो के करिवो ना एनुमरेटर तथ्य संग्रहकारी जड़े तथ्य प्रदानकारी ठारू तार तथ्य संग्रह करी ताको रेकर्ड करिवो एवं ताको कोन करिवो माने नोट डाउन करिवो कोड कोन माने रहिछि माने तार माने दिग एवं ताको प्रोसेस करके एनालिसिस करिवो. So this method is very useful for government departments, research institute and research scholars. So here the questions or schedules are prepared by the enumerators in a very tactfully to collect correct information. जदि आम ठीक तथ्य संग्रह करवा ताले टैक्टफुल भाव में क्वेश्चन तैयार होगा दरकार एवं जो क्वेश्चन माने वेरी सिंपल हवा दरकार वेरी जोड़ा कि आम कहे इजी हवा दरकार सो दैट माने इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड जदि जन सहज बुझीपर ताले से तथ्य दे पारिबो. Now students, so this is another method of primary data collection. So questionnaire or schedules with the help of enumerators. So enumerator will prepare certain questions or schedules to collect the information. So the enumerator will visit the respondent and collect the information. So answers and replies are recorded and noted down in the schedule or questionnaire and it is processed for analysis. So this method is very useful for different departments and different organizations. So so under this method there are certain merits and demerits. केतर सुविधा अछि केतर असुविधा अछि. प्रथम सुविधा ला data collected under this method is more accurate as experienced investigator collects the information. The trained जड़े दक्ष जड़े तालीम प्राप्त जो रही आमर इन्वेस्टिगेटर बा अनुसंधानकारी तथ्य संग्रह करे तेणु एथरे शुद्धता अधिक माने भूल कम थाए कारण जदि जड़े ट्रेंड लोक डाटा कलेक्शन करे सो माने गिव द बेटर रिजल्ट. The second merit is that develops personal relationship between the enumerators and informants or the respondents. When the investigator visits the respondent, so he or she has to keep the relation, personal relation. ता सहित तांकर गोटे संपर्क आसे जदि संपर्क आसे से जो तथ्य ताकू मागिबो माने ठीक से तथ्य दबो. So the investor will have to keep good relation so that the informant will be able to furnish correct information. जदि आम ताकू ठीक भाव में माने अंडरस्टैंडिंग करवा ता सहित भल रिलेशन रखा से आमको ठीक तथ्य देव. जदि आम सहित कथबार्ता कि तार एक्सप्रेशन जदि भूल है ताले से आमको तथ्य ठीक तथ्य देव ना. So the enumerator should keep good relation so that the information will be correct. The third merit, it covers wide area. When the field of investigation is wide, so this method is suitable. So ये method रे आमे देखिबा जिते wide range area हो जदि आमे इन माने एनुमरेटर तर कलेक्शन लाइक आमे सेंसस मेथड. सो सेंसस मेथड आमे फ्रॉम डोर टू डोर जाई कि हम तथ्य संग्रह करछे. सो ट्रेंड person is appointed to collect the information. So this method is suitable when the field of inquiry is large or wide. So trained persons are appointed to collect the information. And last merit
The data collected in this method are comprehensive and detailed in nature. आम पार्टली नहीं आम जिते चाहिए से तथ्य आनीपर जमी आम सेंसस भालिका बा जमी आम जनसंख्या तथ्य संग्रह करते जनसंख्या सहित अनेक तथ्य संग्रह करा जाए जमती आमर माने विभिन्न क्षेत्र तथ्य आम संग्रह करूँ तेणु एथरे कम्प्रिहेन्सिव स्टडी भास्ट स्टडी एंड इन डिटेल आमे माने डिटेल स्टडी करि परिबा तथ्य डिटेल आनी परिबा सो दिस मेथड इज मोर सुटेबल सो एथरे मध्ये केते गुडी दोष देखिया मिले बा दुर्गुण देखिया मिले देयर आर सम डिमेरिट्स इन दिस मेथड इज हाईली एक्सपेंसिव as the investigators are paid for door to door service कारण जेहेतु घर को घर बुली तथ्य संग्रह करे इन्वेस्टिगेटर मानकू मध्य तांको पेमेंट करा जाए एटा खर्च अधिक हुए व्ययबहुल सो द रेम्युनरेशंस फॉर द कलेक्शन ऑफ डाटा is to be paid to the investigator. So another demerit is it is time consuming as every informant is covered for the collection of data. It is time consuming process. So time consuming process, it takes a lot of time to collect the information. कारण डोर टू डोर जड़े इन्वेस्टिगेटर जाए एनुमेटर जाए तो तथ्य संग्रह करने समय लगे a lot of time is required to collect the information. The next demerit is it needs trained and skilled enumerators which are not easily available. कारण ये जो क्षेत्र में तथ्य संग्रह करने आमको दक्ष आमको तालीम प्राप्त अनुसंधान कार्य आवश्यकता अच्छी a day or two more number of skilled investigators will not be produced कारण दिने दी दिन आम अनेक मान ट्रेंड अनुसंधानकारी को आम तैयारी करें ना लॉट ऑफ ट्रेनिंग इज टू बी रिक्वायर्ड तालीम दरकार फ्रॉम टाइम टू टाइम ट्रेनिंग इज टू बी इम्पार्टेड टू द इन्वेस्टिगेटर फॉर कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन सो it needs the trained and skilled enumerators which is a time taking process. Another demerit is there is a personal prejudice of the correspondents. एथर मध्य किछि पर्सनल प्रेजुडिस रही बेले बेले एनुमरेटर प्रभावित हुए अनेक उपादान द्वारा से प्रभावित हुए तेणु एतरे मध्य ए मेथड मध्य केते दुर्गुण अछि सो ए लॉट ऑफ केयर इज टू बी अंडरटेकन टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन दिस मेथड सो नाउ वी विल गो टू अनदर मेथड टू कलेक्ट द डाटा सो completely say that the techniques of data collection, the two important technique of data collection, one is census method, another is sampling method. Census method is a method of complete enumeration method जोटा कि आम जनसंख्या तथ्य संग्रह करछे फ्रॉम डोर टू डोर. अंडर दिस मेथड each and every unit of the universe is selected for data collection. यूनिवर्स कहले आम जो समस्त जो क्षेत्र माने यूनिवर्स माने गोटे लार्ज पार्ट रु आम स्मॉल पार्ट डाटा कलेक्शन करवा प्रत्येक यूनिट को आम कवर करवा. सो अंडर दिस मेथड ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द यूनिवर्स समग्र क्षेत्र रु तथ्य संग्रह करवा प्रत्येक गोटे को आम गोटे क्या छाड़वा ना ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ द सैंपल इज टू बी कलेक्टेड. सो यू नो in this method all the units are covered for data collection. So you know Indian census is an example of a complete enumeration. So कि आम सेंसस माध्यम जो तथ्य संग्रह करुचे सेटा होची कौन ना कंप्लीट एनुमरेशन मेथड बा आम कहूचे सेंसस मेथड. सो अनदर इज ए थिंग
you will be kept in mind. So, there are certain merits under this method. Census method, there are some merits. The results of data collection are likely to be more accurate as every unit of the universe is covered. जेहेतु यूनिवर्स समस्त एकक को आम अध्ययन करें ताकू एनक्वारी नौ थाए तेणुक ये तथ्यर शुद्धता बहुत अधिक. डाटा इज मोर एक्यूरेट, honest data are collected. So, number 2 merit is, if the unit are not homogeneous, this method is suitable for collection of data. जदि यूनिट होमोजेनियस नहीं ताले हमें सब तथ्य आनी परिबा ताकू प्रोसेस करा जीवो. When the investigator visits to the informant and collect the information from door to door, each and every inquiry is to be conducted. ताले प्रत्येक दिग को आम नहीं परिबा, जेकोन तथ्य आम चाहिए भी कलेक्शन करि परिबा. तेणुकरी द एरिया will be more and vast. So, now under this method there is a extensive study in which investigator solves many problems during investigation. So, तार जो अनुसंधान समय अनेक समस्या को सी ताको समाधान करता है एवं ठीक तथ्य संग्रह करिवार सुजोग पाई थाए. So, this is all about the merits of census method. So, now we have discussed in detail about different methods of primary data collection. So, I feel you will understand better, and in my previous session we have already discussed about the primary data and second data collection. So, you know it is very important for the purpose of inquiry. So, thank you all my dear students.